Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Shri Radha Govinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Samaveta Bhakta-vrinda ki jai, Gaura Premanande Hari Hari Gaura.
You know that I'm coming from Russia, right? I hope all you know how to speak Russian. I'm going to give you a class in Russian language. Хорошо? Все понимаете на русском языке или нет? Joking. I'm going to give in English. So, how many of you understand English? No, you don't translate. If they don't understand, they don't raise a hand. Some may not. Yes, sure. You're going to translate, right? Yeah. Achha. So, Srimad Bhagavatam is a way to experience Krishna in this time, in this Kali Yuga. You can speak without, so many times, ages, people speak without microphone. All Srimad Bhagavatam was spoken without microphone, right? 7 days. So, you can. श्रीमद् भागवतम जो है विदाउट माइक्रोफोन बोला गया है, ये जो स्वामी ने बोला. So, no problem. You can hear. So, because Srimad Bhagavatam was compiled by Srila Vyasadeva, we will offer him obeisances and prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading from Srimad Bhagavatam Canto 3 and Chapter 5, Text 22. This is, I guess, the shortest commentary I've seen. No, it's 2 sentences. Sometimes it's 1 sentence. Today, commentary is 2 sentences. No words? Okay. You can hear. Athate Bhagavan Leela. Athate Bhagavan Leela. Yogamayorup Rimhita. Yogamayorum Bhrimhita. Vishwastit Uddhavatartha. Vishwastit Uddhavatartha. Varnayam Anupurvasha. Varnyamya Anupurvasha. Just imagine how great were personalities who can remember all Srimad Bhagavatam. When you repeat one line, we cannot remember. Can you remember first line? No. That's our memory. Okay, I will not torture you by repeating the verse. Atha, therefore, te, unto you, Bhagavat, pertaining to personality of Godhead, Leela, pastimes, Yogamaya, energy of the Lord, Uru, greatly, Bhrimhita, extended by, Vishwa, of the cosmic world, Sthiti, maintenance, Udbhava, creation, Anta,
dissolution. Artha, purpose. Varnyami, I shall describe. Anupurvashaha, systematically. English and reading Hindi. Sure. Yeah, sure. So, translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. I shall, therefore, describe to you the pastimes by which the personality of Godhead extends His transcendental potency for creation, maintenance, and dissolution of the cosmic world as they occur one after another. Purport. Okay. अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं. The purport. The omnipotent Lord, by His different energies, can perform anything and everything He likes. The creation of cosmic world is done by His Yogamaya energy. सर्वशक्तिमान भगवान श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं. विराट जगत का सृजन उनकी योग माया शक्ति द्वारा किया जाता है. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् गोपाल कृष्ण वैष्णव नाम्ने प्रभुपादस्य चैतन्य प्रकाशिते च प्रार्थनां कृत्वा साधु भगवत्पादे नमः. I'm very thankful that I can speak Srimad Bhagavatam class today. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे भागवतम कक्षा देने का अवसर मिल रहा है. I ask for blessings of those devotees who are willing to give blessings. तो मैं उन भक्तों का आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ जो आशीर्वाद देना चाहते हैं. And definitely I'm begging for your undivided attention. और मैं आप सबका एक चित्त एकाग्र आपका अटेंशन. Because similarly like Bhagavad Gita was spoken by Krishna because Arjuna was very much attentive. तो जैसे हम देखते हैं भगवद गीता अर्जुन को बोला गया क्योंकि अर्जुन बहुत एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे. And because of that, sometimes it's compared that Krishna was a calf and he was milking, the Bhagavad Gita is the nectar of the milk because he was very willing to receive it. इसी तरह मेंशन किया जाता है कि कृष्ण थे वो एक गाय की तरह हैं और उनसे दूध दुहा जा रहा है और अर्जुन उस दूध को पी रहे हैं. Those of you who have tried to preach definitely have this experience. If the person is coming to you and asking serious questions, somehow or another, Krishna from inside gives you a knowledge and inspiration to talk. So, आप सभी को एक्सपीरियंस होगा जो प्रचार करते हैं, जो सड़कों में जाके भगवद गीता देते हैं, किसी को बताते प्रचार करते हैं. तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, दूसरे जो बुक्स लेते हैं जिनको आप प्रचार करते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं, तो कई बार हमें उत्तर पता नहीं होता, लेकिन भगवान क्योंकि हृदय में है वो हमें डायरेक्ट करते हैं और वो आंसर देते हैं. We don't know how long Srimad Bhagavatam
the whole narration would be if there wouldn't be such a intense and willing questions by Parikshit Maharaj. हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक बहुत तीव्र जिज्ञासा और प्रश्न है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। Actually, Srimad Bhagavatam itself originally is very, very big. श्रीमद् भागवतम जो ओरिजिनल रूप से उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार में। Our acharyas explain that in our planet we have this Srimad Bhagavatam, 18,000 verses, right? हमारे आचार्यगण ऐसा वर्णन करते हैं कि हमारे इस ग्रह में हम रह रहे हैं, उसमें श्रीमद् भागवतम का स्वरूप उसमें 18,000 श्लोक हैं। But on demigod planets, Srimad Bhagavatam has 1 million verses. लेकिन जो देवी देवताओं के जो ग्रह हैं वहाँ जो श्रीमद् भागवतम है उसमें 1 मिलियन 10 लाख श्लोक। And Yamaraj, you know Yamaraj? You know Yamaraj? Who knows आप Yamaraj? लोगों को यमराज I don't know him. लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, आप किसको पता है यमराज जी के बारे में? कौन Hopefully nobody meets Yamaraj. Oh, it's your passport, Yamaraj, right? Achha. Be careful. Don't sit too close to him. Yamaraj has very unusual version of Srimad Bhagavatam. तो यमराज जो हैं बहुत अनयूजुअल वर्जन है श्रीमद् भागवतम के। Because he has to place the soul in different type of body. How many bodies are there? 54। Yeah, 84 तो like. प्रभु जी बोल रहे हैं कि यमराज जी को क्या करना पड़ता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को ट्रांसफर करते हैं। This is not very thankful service, you know. ये बहुत अच्छा मतलब थैंकफुल सर्विस नहीं है। Just imagine some nice soul. We are all originally from spiritual world, right? हम सब ओरिजिनल रूप से आध्यात्मिक जगत से हैं। Yeah, like Jai Vijay. They were originally guards. We have two Jai Vijay. Yeah. तो आप And they were born as demons. तो जय विजय हैं, वो क्या हैं, बैकुंठ के गार्ड थे, भगवान के द्वार पालक थे। So we are spirit soul also, pure spirit soul. तो बहुत कम ऐसे आत्मा हैं। And Yamaraj has to place that soul into the body of some dirty animal or insect or tree, you know. और यमराज उन आत्माओं को Snake. किसी सांप में, बिच्छू में, ऐसे जानवरों के शरीर में डालते हैं। So to make sure the Yamaraj doesn't forget Krishna during this seva, तो ये सुनिश्चित करने के लिए यमराज ये सेवा कर रहे हैं, एक आत्मा को ऐसे शरीर में उनको रख रहे हैं, तो His version. भगवान को नहीं भूलें। his version of Srimad Bhagavatam describes all incarnations of Krishna in every piece of life. तो ये जो वर्जन है श्रीमद् भागवतम का हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे भगवान के अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। Snake, सभी स्पीसीज में जो cockroach, जैसे सांप, bird, बिच्छू, पक्षी, deer, anything, all 84 lakhs. 84 लाख योनियों में सभी Yeah. में भगवान So he can remember Krishna's avatar when he is doing that seva. तो इस तरह से यमराज जी उस अवतार को ध्यान करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं। But the trick is he remembers. बट Yeah. लेकिन यमराज जी क्या करते हैं, वो याद करते हैं भगवान को। We have short Srimad Bhagavatam, much shorter than him. We have short version. हमारे पास जो भागवतम है बहुत छोटा उसका रूप है, Still, how much we remember every day? लेकिन हम कितना याद रख पाते हैं डेली। Hmm? This morning, any of you remember some verse from Srimad Bhagavatam? आप में से अभी सुबह जो हमने भागवतम पाठ किया, किसी को याद है कौन सा वर्ष याद है किसी Not को? easy, not easy. Therefore, the beginning of process is Shravanam. इसलिए शुरुआत क्या है प्रोसेस का, भक्ति प्रोसेस का? श्रवण करना, सुनना। And some of us
don't rise to next level. We just stay on Shravanam level for a long time. और कई बार कुछ हम में से कुछ वक्त श्रवणम लेवल पे ही रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। I have to admit myself, I'm not the young in a body wise. तो गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं भी शरीर शरीर की वजह से मैं यंग नहीं हूँ। So, couple years ago, I was having big, beautiful chance to take Bhakti Shastri course in Vrindavan. तो कुछ समय पहले मुझे अवसर मिला वृंदावन में भक्ति शास्त्री कोर्स करने का। And the biggest surprise for me that at this age of 56, I couldn't learn new verses, even from Bhagavad Gita. तो आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस उम्र में मैं नए जो श्लोक हैं भगवद गीता It के was वो big याद नहीं कर discovery, पाया। a surprise for me. ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, नए श्लोक याद नहीं कर पाया इस उम्र में। It was very intense. If anybody knows what the courses are, you wake up in the morning, you chant your rounds, then you have 3 classes, 2 hours each, altogether 6 hours classes. And then you have to do also homework, you have to write essays, and so on. So it's like full day long. Shastra, 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 Shastra. तो उसमें बहुत सारी दिनचर्या पूरा 3 क्लासेस रहती हैं, सुबह उठ के आपको चैंटिंग करना है 3 क्लासेस और हर एक क्लास 2-2 घंटे की रहती है पूरा इसकी And those verses from Bhagavad Gita which I could remember was from my young age when I was brahmachari. और जो मैं वर्सेस कुछ श्लोक याद कर पाया भगवद गीता के अभी याद है, वो जब मैं छोटा था ब्रह्मचारी था, जब यंग एज में वही वर्ष थे, वही याद कर पाया। Because young age is like like a paper sucking all the liquid, तो जो यंग एज है अभी नौ युवक या नौ युवती, तो वो पेपर जैसे है जो बहुत सारा पानी सूखता है। You write it ink or put a paper with some water, it just sucks in everything. आप पानी में पेपर डालिए, कागज डालिए, तो क्या करता है, पानी को सूखता है। So therefore, the Vedic system has this period of brahmacharya when you learn things from the heart. इसलिए वैदिक सभ्यता में वैदिक कल्चर है, उसमें एक पेड़ रहता है जिसमें Shri ब्रह्मचारी Shri लाइफ Radha रहता है। Govinda ki jai. You may not understand what you're learning. आपको आप समझ कई बार रहता है, हम समझ नहीं पाए जो आप सीखते हैं। Because every verse of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam has very many levels of understanding, how many deep it is. क्योंकि जो वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के, वो कई लेवल में हम समझ सकते हैं, शुरुआती लेवल में सब नहीं समझ सकते। For example, there's the first verse of Srimad Bhagavatam, जैसे कि हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। And our acharyas have taken only the first verse and explained it every syllable. और हमारे जो आचार्य हैं सिर्फ पहला श्लोक लिए और उसके हर एक सिलेबल, हर एक अक्षर को, How every syllable of first verse refers to the every pastime explained in Srimad Bhagavatam in all 12 cantos. तो कैसे हमारे आचार्य ने एक्सप्लेन किया कि हर एक अक्षर पहला वर्ष का श्रीमद् भागवतम का सभी जितने भगवान की लीलाएं हुई हैं 12 स्कंद में, उन सभी का वर्णन करता है सिर्फ एक श्लोक के जो अक्षर हैं। So Prabhupada has kindly given us only the topmost level, the simple version of Srimad Bhagavatam. प्रभुपाद जी ने हमें सबसे टॉप मोस्ट, सबसे उच्च और बहुत सरल भागवतम का वर्जन हमें प्रदान किया। When he was translating Srimad Bhagavatam in the mornings, he was waking up. Who knows what time he woke up? तो प्रभुपाद जी जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे भागवतम, तो वो सुबह उठते थे। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि कितने बजे उठते थे प्रभुपाद ट्रांसलेट करने? Who have read the biography of Prabhupada? किसने लीलामृत पढ़ा है? प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है। Achha. Looks like you like Srimad Bhagavatam more than Prabhupada. लगता है कि आपको श्रीमद् भागवतम ज़्यादा अच्छी लगती है प्रभुपाद जी। Today we are learning how to understand Srila Prabhupada. आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं
शिला प्रभुपाद के बारे में। So this is the amazing work of acharyas. They don't sleep at night. They translate, they write the books. ये बहुत अद्भुत बात है हमारे आचार्यों के बारे में कि वो रात को सोते नहीं हैं, वो रात को श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ऐसे ग्रंथों का लिखते हैं, उसको तात्पर्य देते हैं, उस पर टीका देते हैं। We can remember also starting from Bhaktivinoda Thakur. हम याद कर सकते हैं स्टार्टिंग में भक्ति विनोद ठाकुर से। He went to sleep 8 o'clock वो रात को 8 बजे सोने जाते थे and wake up 10 o'clock. और उठते थे 10 बजे रात को। And he was writing books all night. और वो किताबें लिखते थे पूरा रात भर किताब लिखते थे। And then he was chanting his rounds, और उसके बाद वो अपने जो हरे कृष्ण महामंत्र took some rest, took some prasadam, went to work, went to his job. थोड़ा सा प्रसाद लेते थे, उसके बाद अपने कार्य पे जाते थे। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। How many of our grihasthas can do that? आप में से कितने गृहस्थ ये कर सकते हैं? About 6 Goswamis, it said same. और 6 गोस्वामी जो हैं वृंदावन में, They were chanting all night, and sometimes they sleep, sometimes they forgot to sleep. और कभी-कभी वो पूरा रात्रि भर भगवान हरे कृष्ण महामंत्र करते थे और कभी-कभी सोते थे, कभी-कभी भूल जाते थे कि सोना है उनको। So Prabhupada was doing the same. प्रभुपाद जी भी यही कर रहे हैं। He was waking up at middle of the night, somewhere it's 12 o'clock. वो रात्रि अर्धरात्रि में उठते थे प्रभुपाद। 4, 5, 6 hours he was writing books. और 4, 5, 6 घंटे वो श्रीमद् भागवतम कमेंट्री लिखते थे। And he was reading many other commentaries of previous acharyas. और वो बहुत सारी जो कमेंट्रीज टीका श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे आचार्यों की पढ़ते थे। Those who are interested, there is a version, I'm not sure, there's some version, some part is printed and 10 canto, but there's a version of all 10 cantos with the commentaries, I think there's 6 or 8 different acharyas. जो लोग जिनको इंटरेस्ट है उसमें एक वर्जन है जिसमें 6 से 8 आचार्यों का टीका है उसमें वो भागवतम में। Yeah, just imagine, I give this verse and I give the class. आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि मैं ये वर्स पढ़ा और इस पर So next day, tomorrow, the same verse will be given by Maharaj. और कल यही सेम वर्स पे जो क्लास दिया जाएगा महाराज के द्वारा। आप कल्पना करिए। Will he talk the same? क्या वो वही चीज बोलेंगे जो मैंने बोला है? No. नहीं। Same acharyas. They have one verse of Srimad Bhagavatam and each of them gives some commentary which other doesn't give. इसी तरह बहुत सारे आचार्य हैं, एक ही वर्ष पर, एक ही श्लोक पर बहुत सारी टीका देते हैं। So Prabhupada was reading all the commentaries of Vishwanatha Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, Baladev Vidyabhushan and so on. And he put together the essence, the most important thing in the commentaries of his Bhaktivedanta commentaries. इसी तरह प्रभुपाद जी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण आचार्यों का अध्ययन करते थे टीका और फिर उसके बाद उन सब का सार श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी ने दिया। And usually we understand that Srila Prabhupada is a founder acharya of ISKCON, right? जनरली हम समझते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। But the term of samstapaka acharya is not limited to ISKCON. लेकिन जो संस्थापक आचार्य की जो उपाधि है वो सिर्फ इस्कॉन तक सीमित नहीं है। We know that Krishna. We know that in our parampara there is also other founder acharyas, right? हम देखते हैं हमारी परंपरा में और भी संस्थापक आचार्य हैं। Srila Prabhupada in the beginning of Nectar of Devotion writes, this whole movement is established by Rupa Goswami. श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के आरंभ में लिखते हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है वो रूप गोस्वामी द्वारा And of course, the whole Sankirtan movement is established by Lord Chaitanya.
all Sankirtana movement is और established हम by Lord. देखते हैं कि जो पूरा संकीर्तन आंदोलन है वो स्थापित किया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा. And before we have parampara, great acharyas, how to say, samsthapak acharyas like, Vishnu Swami, like Ramadajacharya. We have also Brahma Sampradaya, it's in the middle. Who was the Madhvacharya, right? तो उसके पहले हमारे पास बहुत सारे संस्थापक आचार्य हैं जैसे मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी. What does it mean to establish something? तो इसका क्या मतलब है, स्थापित करने का क्या मतलब है? You can establish temple, right? हम टेम्पल स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं. The main thing is to put the cornerstone, the fundament, the basis of it. सबसे मुख्य बात है उसकी जो बेसिक फाउंडेशन स्थापित करना. Someone else may be there doing the whole construction and finishing and painting, but establishing means that putting the most important part, which is the basis, the fundament. तो कोई मंदिर बना सकता है, उसको तैयार कर सकता है, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है कि जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसके सिद्धांत बनाना. और So same thing, Srila Prabhupada not only established the movement as such, as a society, but he, by his commentaries, he established the principles of devotion according this time. तो श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ISKCON संस्था ही नहीं स्थापित किया, बट उन्होंने सिद्धांत दिया कि कैसे जो भक्ति के सिद्धांत पर चलकर हम इस आंदोलन में. And some other, how to say, Vaishnava movement in a world, they not really understood why Prabhupada is doing that. कुछ वैष्णव जो और आंदोलन है वो समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों किए. Brahmacharya ashram, never heard of before. जैसे ब्रह्मचारिणी आश्रम जो पाश्चात्य देश में प्रभुपाद जी बनाए. But in Western world, कभी ऐसा नहीं हुआ. but Western world, men and women mix together easily, so they have also पाश्चात्य देश में स्त्री पुरुष घुलते मिलते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं. many things like this. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. We are very thankful to Prabhupada for that. हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं प्रभुपाद का इसके लिए. When we read his commentary, it feels so natural. जब हम प्रभुपाद जी का टीका पढ़ते हैं तो बहुत स्वाभाविक लगता है, Yes. बहुत नेचुरल. And especially when you read his biography, one part of Bhakti Shastri was to listen how different disciples of Srila Prabhupada were reading Prabhupada Lilamrit. तो एक प्रभुपाद जी का जीवनी में हम पढ़ते हैं कि कैसे उनके बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी के जीवनी को पढ़ते हैं. Because in some years, we will be so unfortunate that all disciples of Prabhupada will be gone. क्योंकि कुछ वर्षों में हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होंगे कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो इस धराधाम में नहीं रहेंगे. So what we lose two many things, but two main things we lose when we lose Prabhupada disciples. तो हम लोग क्या खो देंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं हम खो देंगे जब प्रभुपाद जी के शिष्य इस धराधाम पर नहीं रहेंगे. One is the context of the lila and instructions that Prabhupada has given. ये पहली चीज़ है जो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया किस डिसाइपल को कैसे. For example, the Srimad Bhagavatam commentaries are connected to the Srimad Bhagavatam. उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्रीज हैं, तो श्रीमद् भागवतम में जो पर्टिकुलर पास टाइम्स हो रहे हैं उसके लिए बताएं प्रभुपाद. But there's so much more. For example, his classes, his letters, morning walks, all these things are connected to the disciples. How they were interacted. और श्रीमद् भागवतम की जो ये बुक है इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के और उनकी मॉर्निंग वॉक लेक्चर्स हैं, कॉन्वर्सेशन है और लेटर्स हैं, पत्र जो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को लिखे. So, if we don't absorb that knowledge in that context from Prabhupada disciples, when they're gone, we lose it.
तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने उसको बोला वो उनके शिष्यों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, और उनके शिष्य नहीं रहेंगे तो हम उसको खो देंगे। Atman is an emotional connection. और दूसरा जो चीज़ है हम खो देंगे वो है एक इमोशनल जो कनेक्शन है, जुड़ाव है। Because the Prabhupada disciples were so much in love with him. क्योंकि प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे, Much more than any of us have experienced our relationship with our Father. उससे कहीं ज़्यादा जो हम अपने शरीर के माता पिता से एक्सपीरियंस करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के लिए प्रेम करते हैं। Prabhupada nicely said, my own children were not very appreciative. They were not loving me so much. प्रभुपाद जी ने कहा मेरे जो खुद के बच्चे थे वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किए, इतना ज़्यादा प्रेम नहीं दिए जितना मेरे शिष्यों ने दिया। My spiritual daughters and sons love me much more. मेरे जो आध्यात्मिक बच्चे हैं, पुत्री और पुत्र हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। Because they have dedicated their life क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है helping me. मुझे मदद करने के लिए इस आंदोलन में। I have seen many Prabhupada disciples remembering personal interactions and starting crying. That was so sweet, so nice. मैंने प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों को देखा है पर्सनली कि वो कभी कभी प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को याद करते हैं और तुरंत रोने लगते हैं। Thanks, we have some of the books describing. और They have biographies of Prabhupada. बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास कुछ ऐसे किताबें हैं जो डिस्क्राइब करती हैं। Yeah, like Transcendental Diary. ये ट्रांसडेंटल डायरी, I will build you temple. I will build you temple by Guru Raj Maharaj. टेम्पल जो गिरिराज महाराज ने लिखा है। ट्रांसडेंटल डायरी हरीश शौरी गुरु जी ने लिखा है। What was this? Hunting rhinoceros was so much. Chasing rhinos. Chasing rhinoceros. Chasing rhinoceros महाराज ने लिखा है। Yeah. So all these books describe Prabhupada. Just imagine, like Christianity would have a Bible which is like this, and have a books like this of disciples of Jesus, the personal interactions. How much they'll be more happy, but they don't have. We have. तो जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे Yeah, if the Christians would have, besides the Bible, like 5 times more personal experience of his disciples with Jesus, would be very happy, but they don't have. We have. जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में जो बाइबल उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन उनके डिसाइपल्स के बारे में बहुत ज़्यादा, उससे 5 गुना ज़्यादा किताबें हैं बताने के लिए। So, Even Muslim people have this, if you know more or less Muslim culture. Besides the basic Quran, they have also the description of life of the Prophet. तो उसी तरह मुस्लिम जो धर्म है उसमें हम देखते हैं कि जो कुरान है उसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं उनके शिष्यों के बारे में। In a Buddhist, same idea. They have main writings of Buddha, and then they have also the teachings of the first generations of the teachers of Buddhists, and they are equally valuable. इसी तरह बुद्धिस्ट रिलीजन में जो लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने बताया इंस्ट्रक्शन वो है, लेकिन उनके फर्स्ट जनरेशन जो डिसाइपल्स ने बनाया उसके भी इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दिए। So we have to value what we have. इसलिए हमें वैल्यू करना है इसको जो हमारे पास है। Because this is the whole purpose of Krishna. तो कृष्ण का मुख्य उद्देश्य यही है। We hear here to see that creation is described by in this chapter. हम देखते हैं इस अध्याय में भागवतम के जो कैसे सृष्टि का सृजन होता है उसके बारे में। But for me, it was very interesting experience when I was reading 11th canto of Srimad Bhagavatam. मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव था जब मैं भागवतम का 11वां स्कंद पढ़ रहा था। Everybody heard about Uddhava Gita? मैंने उद्धव गीता के बारे में पहले सुना था। Uddhava was very close friend
of Krishna. उद्धव जी भगवान के कृष्ण के बहुत अंतरंग सखा थे. They were so close and so intimate that Krishna was sitting in a throne in a king's palace, and Uddhava was sitting next to him, and he was his advisor. इतना वो अंतरंग थे उद्धव जी कृष्ण के कि जब कृष्ण द्वारका में अपने सुधर्मा सभा में बैठते थे और उद्धव जी उनके पास बैठते थे और उनको सलाह देते थे. And you don't believe that Krishna never did anything against the Uddhava's advice. और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो कृष्ण है वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं किए जो कि उद्धव जी ने उनको सलाह नहीं दिया. जो उद्धव जी सलाह देते वही करते. And they had very special sign language and the eye language and something like this. So if Krishna was talking, he could give some sign or ask some question to Uddhava while he was talking. And without speaking, Uddhava was answering. तो कई बार जो कृष्ण थे विदाउट जब वो प्रश्न पूछते थे और अपने सांकेतिक भाषा से वो कुछ बोलते थे और उद्धव जी बिना बोले ही उसका उत्तर दे देते. And when he wanted to pacify inhabitants of Vrindavan because of their separation, who he sent? Sent Uddhava. और जब वृंदावन में सब वहाँ के वृंदावन वासी भगवान से विरह महसूस कर रहे थे तो भगवान ने किसको भेजा उनको सांत्वना देने के लिए? उद्धव जी को. Because Rupa Goswami in his Ujjwal Nilmani explained the messenger has to be, can be in different levels, a messenger, different levels of messengers. रूप गोस्वामी पाद उज्जवल नीलमणि आपका एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद ने लिखा उसमें वर्णन करते हैं कि जो वाहक संदेश वाहक हैं वो बहुत लेवल्स के हो सकते हैं. Normal messenger is like postman. He just delivers the mail, paper, just okay, receive it. हम देखते हैं जो संदेश वाहक रहते हैं वो एक पोस्टमैन जैसे रहते हैं. पोस्टमैन आता है और वो पत्र को देता है. But the best messenger is the one who knows the context of the message. And if there's any questions, they can explain. लेकिन सबसे अच्छा संदेश वाहक कौन है? जो कि उस पत्र के अंदर क्या है उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट कंटेंट क्या है उसको भी जानता है और अगर कोई क्वेश्चन करता है कोई प्रश्न करता है उनसे. More than that, the most important message will never be written. It will be said personally. और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश रहता है वो कभी भी रिटर्न नहीं दिया जाता उसको बोला जाता है. It's like Rukmini, she was sending message to Krishna by Brahmana. हम देखते हैं कि रुक्मणी जी विवाह के लिए कृष्ण को संदेश भेजती हैं और एक ब्राह्मण के. And if you get caught by this message, a written one, it's not very good. अगर वो रिटर्न मैसेज भेजेगी अगर वो पकड़ लिए जाते हैं तो अच्छा नहीं होगा. It's a compromise. But if you have a messenger who just talks, you catch him and say, I don't know. लेकिन अगर आपको संदेश वाहक ऐसा कोई है जो कि कोई लिखित कुछ नहीं लिया संदेश अगर वो पकड़ा भी जाता है तो पूछता है क्या मैसेज है तो वो बोल सकता है मैं नहीं जानता. So Krishna was writing actual physical letter to everyone, to his parents, to his friends, to gopis. Everyone received the physical letter written by Krishna. पर्सनल रूप से पत्र लिखते थे सभी को उनके जो सखा गोपी सभी को. Must be quite a big bag of letters, carried by Uddhava. इस तरह पत्र लिखते तो बहुत बड़ा थैला बन जाता. इतने सारे गोपीज हैं करोड़ों गोपीज ग्वाल. But besides that, he gave personal message to everyone as well. उन्होंने इसके अलावा भी पर्सनल कुछ मैसेजेस दिए सभी को. And besides, of course, Vrindavan, there was also some sages which were Krishna not able to visit. और भी कुछ ऐसे वृंदावन In Himalayas. में कुछ संत थे जिनको कृष्ण स्वयं नहीं मिल पाए. So Uddhava was not very happy तो उद्धव जी प्रसन्न नहीं थे because he wanted to leave. He understood Krishna is leaving the planet. I want to go with you. क्योंकि कृष्ण जब धरा धाम को छोड़ के अपने धाम जा रहे थे तो उद्धव जी भी जाना चाहते थे
He said, no, 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 no. You have more, some task to do. तो लेकिन कृष्ण जी ने बोला कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते आपको There is बहुत some बड़ी कार्य sages है। which I didn't visit, so I have to go to him, deliver the message to them. और कुछ महात्मा कुछ संत ऐसे हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया तो आपको उनके पास जाना है और मेरा संदेश देना है। And then Uddhava left, and what Krishna was doing, 11th canto describes, he was sitting underneath a pipala tree, I think so, or some holy tree, and meditating. तो 11वें स्कंद में वर्णन है कि कृष्ण जी बैठ के एक वृक्ष के नीचे पवित्र वृक्ष के नीचे और So Krishna was meditating ध्यान कर रहे थे about very, very important subjects. और बहुत मुख्य विषयों के बारे में कृष्ण जी ध्यान कर रहे थे। How to spread Krishna consciousness in Kali Yuga. वो किस विषय के बारे में ध्यान कर रहे थे कि कैसे कलयुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो। He was planning वो प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे। on which time, which age, किस समय, which किस युग- acharya will be coming. किस समय किस युग में कौन से आचार्य आएंगे। Because he knew, in short while, he will come as Lord Chaitanya. क्योंकि वो उनको पता था कि कुछ समय बाद उनको भी आना है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। He knew that he has to take with him from spiritual world the best preachers and best dancers, to have a Sankirtan movement. क्योंकि उनको पता था कि आध्यात्मिक जगत से जो सबसे बेस्ट प्रीचर्स हैं और सबसे बेस्ट जो डांस करने वाले हैं उनको लेकर आना है इस भौतिक जगत So, before that, some acharya, Advaita has come before. He has to call for me, so I have a reason to come. तो उसके पहले अद्वैत आचार्य आए और उन्होंने उनको बुलाया फिर भगवान आए। So when the Chaitanya movement is finished and he passes back to spiritual world, there is more acharyas. I have to send them again to do parampara. Yeah. तो जब चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन जब ये धराधाम में नहीं दिखेगा फिर और भी आचार्यों को भेजेंगे। We hear the story about Prabhupada, that's happened the same thing. Prabhupada said, I didn't want to come. I didn't want to love Krishna. I don't want to come to this material world, but Krishna asked me, please do, please go. कुछ आचार्यों को बोलते हैं कि हमें नहीं जाना इस भौतिक जगत में लेकिन कृष्ण उनको भेजते हैं इस भौतिक जगत में प्रचार के लिए। We are planning to surrender to Krishna and never come back here to the material world. This is our desire. No, I don't want to come back here. बहुत We don't want to come back to the material world. हम लोग भी इस भौतिक जगत में फिर से नहीं आना चाहते। I don't have time. 10:13. 17. There is verses in Bhagavad Gita explaining that if you surrender to Krishna, you will never come back to material world. We like those verses. एक श्लोक है भगवद गीता में इसमें वर्णन है कि आप भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं आपको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। But one of the six Goswamis, Sanatana Goswami, he wrote Brihad Bhagavatamrita. और वो 6 गोस्वामियों में सबसे जो बड़े थे सनातन गोस्वामी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बृहद भागवतामृत। And there is description how Gop Kumar was traveling all over the universe. और उसमें वर्णन है कैसे गोप कुमार नाम का जो गोप थे वो पूरे यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। And when he reached the border of material and spiritual world, happened something amazing. और जब वो जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में बॉर्डर में पहुंचते हैं तो बहुत आश्चर्यजनक चीज हुई। He saw devotees standing in line to go to preach the material world. Like we going for prasadam, long, long line. The long, long line of devotees standing and asking, I want to go to preach, take part in Chaitanya's movement. और उन्होंने देखा बॉर्डर में बहुत बड़ी लाइन है जैसे हम लोग प्रसादम के लिए लाइन लगाते हैं और बहुत सारे डिवोटीज वेट कर रहे थे
और बहुत उत्सुक थे भौतिक जगत में आने के लिए, प्रचार करने के लिए। Because Krishna has given us simple knowledge. If you try to serve him personally, it's not so close. But if you serve his servants, das, das, and das, or preach this message like Bhagavad Gita and says, there is no more dear person than him. तो कृष्ण ने जो संदेश दिया उनको सर्व करने का प्रयास करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन उनके उनके जो सेवक हैं उनको सर्व करने का प्रयास करते हैं दास दास इस भाव में, वो सबसे अच्छा है। So we want to go to Krishna, right? हम लोग भी कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। But Prahlad, we sing in similar plays every day. Prahlad didn't want to go. He said, I don't care going myself to spiritual world if these all conditioned souls are still here. I don't want to go. लेकिन हम देखते हैं प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि मैं आध्यात्मिक जगत नहीं जाना चाहता जब तक यहाँ जो जीव हैं इस भौतिक जगत में हैं। It's like, you come to prasadam and you just take big bucket and eat yourself and don't care serving others, जिस तरह आप कल्पना करिए कि प्रसाद की बकेट है और प्रसाद की बाल्टी हम खुद पूरा पालें और किसी दूसरे के This is not Vaishnava culture. You serve others first, ये अच्छा नहीं है, आपको पहले दूसरों को सर्व करना चाहिए। and then you eat last. Mataji's know this best, And even more interesting, if you cook for devotees, Mataji's know, especially those cooks know. You feel full, you don't want to eat so much. If you cook for others, you don't want to eat so much. This is the best way to keep slim, Cook for others, you don't want to eat so much. It's best way to be slim, fit. So fit रहने के लिए, slim रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप दूसरे भक्तों के लिए कुक करिए। In the same way, if we want to have a fit spiritual body, serving and helping others, pushing them closer to Krishna, this is what pleases Krishna the most. So इधर आपके बहुत फिट और स्पिरिचुअली जो बॉडी रहेगी, आप दूसरों को भगवान की तरफ लाएंगे तो ये भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। So, my most heartful wish for you today is मेरी हृदयपूर्वक इच्छा है, प्रार्थना है आपके लिए, absorb in the Prabhupada's mood of him trying to bring everyone back to Krishna. मेरी हृदयपूर्वक इच्छा है आप लोग के लिए, प्रार्थना है कि आप लोग जो प्रभुपाद जी का मूड है कि हमेशा प्रभुपाद जी एब्जॉर्ब रहते थे किस मूड में कि कैसे हर एक जीव को कृष्ण के पास लाएं। Yeah. There was one case, I think there was an interview from newspaper or from TV, and Prabhupada was explaining about Varnashrama and 4 social statuses and so on. एक इंटरव्यू था, कुछ न्यूज़पेपर या कोई टीवी रिपोर्टर पूछ रहे थे प्रभुपाद जी वर्ण आश्रम के बारे में बता रहे थे। And the reporter asked, okay, probably you think that you are Brahmana, the topmost one. रिपोर्टर बोलने लगा कि लगता है कि हाँ आप टॉप मोस्ट ब्रह्मा जैसे हैं। And Prabhupada said, no, I am the number 5, 5th class. I am servant of all other classes. सॉरी रिपोर्टर बोल रहे थे कि आप टॉप मोस्ट क्लास हैं, ब्राह्मण क्लास हैं, तो प्रभुपाद जी बोले नहीं हम ब्राह्मण क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, हम 5th क्लास हैं। So without humbleness and desire to serve others, there is no chance for us pleasing Krishna. 5th क्लास जो है, जो और 4 क्लास हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके दास हैं, तो बिना नम्रता के हम चैंटिंग और भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। And if we don't please Krishna, if we don't make him smile, our spiritual life is very slow. अगर हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते, जो कि नम्र बन के और दूसरों को भक्तों को प्रसन्न करने में भगवान प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है बहुत
रुक जाएगी और बहुत स्लो हो जाएगी। I'm completely sure that Prabhupada, by his life, made Krishna happy. मैं पूरी तरह से अ, निश्चित हूँ कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से कृष्ण को प्रसन्न किया। And by taking part in his movement, we can help Prabhupada and make him Krishna happy. और उनके इस आंदोलन में भाग लेकर, प्रभुपाद के इस आंदोलन में भाग लेकर हम उनको हेल्प कर सकते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने में। Srila Prabhupada ki jai. Any questions, commentaries? Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for such a wonderful lecture on the Puja of Krishna Day. My question is, Prabhupada disciples have a intimate relationship with Prabhupada and they see Prabhupada. That's why they give their life to that mission, this mission. But we never see Prabhupada and we never have such a relationship like the disciples have with Prabhupada. So how can we surrender like Prabhupada disciples and serve this mission? Yes, sir. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों का प्रभुपाद जी के पास प्रति बहुत समर्पण था और क्योंकि उनका अंतरंग रिलेशन था, लेकिन हम देखते हैं हमने कभी प्रभुपाद जी को नहीं देखा और उनके जो शिष्य हैं हम उनसे कैसे अंतरंग रिलेशन स्थापित कर सकते हैं? Well, we have to understand that the ability to surrender someone depends on the purity of our heart. तो जो हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी को हमारी जो योग्यता किसी के प्रति समर्पण की वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे हृदय की कितनी शुद्धता है। And purity of the heart can be achieved by personal association with pure devotee like Prabhupada. और हृदय की शुद्धता कैसे प्राप्त की जा सकती है? भाई व्यक्तिगत रूप से संग करके ऐसे शुद्ध भक्तों का जो प्रभुपाद जी का संग किए हैं। But this is not the only way. This is not the only way. This is not the only way. पर ये सिर्फ एक तरीका नहीं, और भी तरीके हैं शुद्धता के। I know some of the Srila Prabhupada disciples, they actually never physically met Prabhupada. They received initiation by letter. मैं कई प्रभुपाद जी शिष्यों को जानता हूँ जो पर्सनली श्री प्रभुपाद जी को नहीं मिले, वो पत्र के माध्यम से उनको दीक्षा मिला। I personally met one Prabhupada disciple from America. He met Prabhupada and saw him for 2 minutes. तो मैं अमेरिका में प्रभुपाद जी के एक शिष्य को मिला जो प्रभुपाद जी को पूरे जीवन में सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले। There is Vani and Vapu. तो दो चीज़ है, एक वाणी और एक बापू, तो शरीर श्रम करना और वाणी के माध्यम से। None of us met Lord Chaitanya. हम में से किसी ने चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले। None of us met Krishna. हम में से कोई कृष्ण से नहीं मिले। But Krishna says, surrender to me. लेकिन कृष्ण ने बोला हमें शरणागत हो जाओ। And his words has a power when he's saying that. और उनके जो शब्दों में शक्ति है। Because his words are completely pure, selfless, and for our benefit. When we hear Krishna saying that, that goes to our heart. क्योंकि जो कृष्ण के शब्द हैं पूरा निस्वार्थ रूप से भगवान बोल रहे हैं और शुद्ध हैं और हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए। Just recently we visited the school of the people who were blind. और कुछ दिन पहले हमने एक विद्यालय गए स्कूल में और वहाँ सब जो बच्चे थे वहाँ के बच्चे अंधे थे। Some of them are completely blind that they were seeing me or Maharaj coming, they could hear. तो कुछ बच्चे तो पूरी तरह से भौतिक रूप से अंधे थे और उन्होंने कभी हमें देखा नहीं या महाराज को देखा नहीं जो आ रहे। But they received the same benefit. लेकिन उन्होंने वही सेम बेनिफिट लाभ प्राप्त किया। Because body changes. क्योंकि ये जो शरीर है वो तो बदलता रहता है। We don't know what kind of body Prabhupada has now. हमको पता नहीं प्रभुपाद जी अभी कहाँ हैं किस। But his instructions are still here. बट उनके जो निर्देश है प्रभुपाद जी के अभी भी यहाँ हैं। We can hear Prabhupada's class. हम प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुन सकते हैं उनकी क्लास। There's a Shakti inside. और उसमें we can get strength, हम
शक्ति प्राप्त कर सकते हैं. And as I mentioned, there is devotees around us, and they are like a small fire. If you say, I'm missing big fire, okay, you'll make 20 small fire, same result. If you miss big fire, like Prabhupada, you can have 20 small fire, like devotees around you. Same heat, same अगर warmth. आप मिस करते हैं आपकी प्रभुपाद जी ऐसे जो बहुत बड़ी आग हैं प्रभुपाद जी, तो आप जो डिवोटीज हैं यहाँ छोटी छोटी आग हैं तो वो सब मिलके बड़ी आग बन सकते हैं, तो उनका संग करिए. और Same सारे result. भक्तों का. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी क्वेश्चंस Yes, sure, sure. Yes. we'll have glorification of Prabhupada. That's- कोई प्रश्न नहीं लेंगे अभी. प्रभुपाद जी का glorification is- ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. श्रील प्रभुपाद महाराज की glorification of Prabhupada.